Good morning, students. In last class, we have talked about the international market segmentation and targeting. Now, we are going to focus on international product decision. Okay, once the market is segmented and the target market is selected, the firm has to design and you can say develop an appropriate marketing mix for each and their all markets that they have selected. And marketing mix consists 4 P's like product, place, promotion and price. In international marketing context, we have to focus or we are concerned with 4 factors. One is your product standardization or customization, means you need to take decision related to this. Then branding, then packaging and labeling, then warranty and after sale service. All these decisions are related to product decisions. Now we are going to cover this one by one. First is your product standardization and customization. What exactly the meaning of product? Product means anything which satisfy your need. ठीक है, whether it is a service, whether it is an object, whether it is a place, anything, or maybe it is an idea, maybe it's tangible or intangible, but whatever thing satisfy your need, it's considered as a product. Okay, and now the standardization or globalization means, standardization means you are offering the same product in your all market, whether it is US market, whether it is Indian market. Okay, and product adaptation or localization means you are changing the product according to their local market. Different market have a different types of product. Maybe you change the composition of product, maybe you change the size of the product, maybe you change the label or packaging of the product, in any way. Okay, if you change the product according to the requirement of their local market, it means product adaptation. Now the product standardization. Why we have product standardization? We have a common product. It help you to reduce the cost. Standardize means you are able to gain economy of scale. आपको economy of scale मिल रहा है क्योंकि आपका volume क्या हो रहा है? It is increasing. So you are able to reduce the per unit cost, and centralized marketing is there, and you can do better R&D, means research and development, means you can more concentrate or you are very efficient in this. Product development आप बहुत short time में कर सकते हैं. You can lower the cost as much as you can by doing R&D. Then universal image is there. It help you to consistent with your image, to build your product image over worldwide. Okay, like McDonald is famous everywhere. ठीक है, तो आपको जो अगर प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज आप रखेंगे तो ये आपको थोड़ी सी हेल्प करता है. देन अर्बन मार्केट्स, इट हेल्प यू इन अर्बन मार्केट्स. लाइक प्रोडक्ट जो है आपका टारगेट आप कर रहे हो डेवलप्ड कंट्रीज़ में, अर्बन मार्केट्स में दे रिक्वायर वेरी लेस अडेप्टेशन. वहाँ स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स की डिमांड ज़्यादा होती है. ठीक है, एंड रिसोर्स कॉन्स्ट्रेंट्स अगर आपके पास हैं, फर्म्स जो हैं उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो दे मे ऑप्ट फॉर द स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट क्योंकि वो हर मार्केट के लिए अलग अलग चेंजेस नहीं कर सकते. देन कंट्री ऑफ ओरिजिन इफेक्ट ऑल्सो देयर. some product enjoy the country of origin reputation, like if we take example of perfume, France perfume is वेरी फेमस. तो वहाँ पर आपको स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं आप, तो आपकी मार्केट वैसे डेवलप हो जाएगी. ठीक है, मीन्स स्विट्ज़रलैंड आप देखेंगे, दे आर फेमस फॉर द वॉचेस, तो स्विट्ज़रलैंड वॉच करके आपकी सेल आउट हो रही है. तो प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन जो है आपको वहाँ हेल्प करता है. यू डोंट नीड टू डू एनी मॉडिफिकेशन इन योर प्रोडक्ट इफ़ यू आर सेलिंग द स्टैंडर्ड प्रोडक्ट. देन प्रोडक्ट अडेप्टेशन. In some time we need a product adaptation. We need to change the product according to the requirement, local market of the product. Like customization of product you need. Like customer orientation आपका होना चाहिए. Means purchasing power वहाँ पर कैसी है कस्टमर की, अब वहाँ का कल्चर, वहाँ का एजुकेशन लेवल कैसा है, अकॉर्डिंगली यू नीड टू चेंज योर प्रोडक्ट.
इनकम लेवल डिफरेंसेस आर देयर. अगर आपका इंडिया है, इंडिया में हर इनकम लेवल के लोग हैं, तो आपको आपके प्रोडक्ट को आपको हर डिफरेंट डिफरेंट साइज में अकॉर्डिंग टू देयर इनकम लेवल आपको उसको ग्रेडिंग करनी पड़ेगी. ठीक है. Then cultural differences are there. Then government regulations sometimes force you to change or to use that particular ingredient. ओके. तो वो भी आपको देखना है. लाइक टेक्निकल स्टैंडर्ड्स हैं आपके, आपके वो भी चेंजेस होते हैं. मीन्स आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक आइटम्स अगर आप देखेंगे, इंडिया यूज़ वेरी हाई वोल्ट, बट इन यूएस दे आर नॉट यूजिंग वेरी हाई वोल्ट in their electric equipments. And non-tariff barriers are there. Local language आपको यूज़ करनी है अपने ads में and all. So these are the non-tariff barriers which are created. To satisfy that also you need a product adaptation. Then climate conditions sometimes force you, or physical environment force you to change your particular product. Okay. Then we have a branding. In branding, what is branding? Branding means a brand. It's a name, term, sign, symbol, design, anything which differentiate your product with other from other product. Then there is a legal protection of brand also. For the goods we are using a trademark, and for services we are using a service mark there. Okay. So brand is helpful for the product in creating आइडेंटिफिकेशन, यू कैन से. ब्रांड अवेयरनेस आपको हेल्प करता है. आप अपने आप को अच्छे से मार्केट कर सकते हो इंटरनेशनली. इट्स गिव यू सर्टेन लेवल ऑफ गारंटी रिगार्डिंग क्वालिटी एंड ऑल इफ़ यू हैव अ ब्रांड. ठीक है. क्वांटिटी, सेटिस्फैक्शन दे गिव यू. It help in promoting your product, satisfying the status need of the customers also, and it help to raise the profit margin also with the help of brand, and it give you a legal protection if you get your brand registered. Okay. So this all these things help us there. So many companies go for the brand. And regarding brand, we have a different types of strategies what we need to follow in international market. Like we have a brand or no brand strategy. Branding increase your cost. अगर आप brand बना रहे हैं तो it means it increase your cost of production and marketing also, क्योंकि आपको अपने प्रोडक्ट को मार्केट भी करना है. ठीक है. इट मे नॉट बी नीडेड इन केस ब्रांडिंग इज नॉट नीडेड इन केस अगर आपका कंज्यूमर इज नॉट एबल टू आइडेंटिफाई योर प्रोडक्ट विद अ पर्टिकुलर सप्लायर. आप जैसे आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स हैं उसमें डिफ्रेंसिएशन करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है. लाइक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट यू हैव वेयर ग्रेडिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट एज कम्पेयर टू ब्रांडिंग. तो वहाँ पर वी डोंट यूज अ ब्रांड. देयर इज नो यूज ऑफ ब्रांड. ठीक है. इट मे नॉट बी नीडेड इन सच केसेस. देन वी स्टडी द फैमिली ब्रांड और इंडिविजुअल ब्रांड. लाइक फैमिली ब्रांड मीन्स ऑल प्रोडक्ट आप कहेंगे मोर और लेस जो है सिमिलर टाइप के अगर हैं. ठीक है. तो यू गो फॉर द फैमिली ब्रांड लाइक फिलिप्स, बजाज. मीन्स वन प्रमोशनल कैंपेन इज सफिशिएंट इनफ फॉर दैट. You can build a customer franchisee over there. You can have a favorable customer reaction. आपके पास अगर उस पर्टिकुलर ब्रांड का फेवरेबल कस्टमर रिएक्शन है, ठीक है, then only you go for a family brand. Otherwise it will give a adverse effect for your product. Then individual brand means आपने क्या किया, अपने हर प्रोडक्ट के लिए इंडिविजुअल अलग अलग ब्रांड आप प्रेफर कर रहे हैं. वेरी टाइप और क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग है. ठीक है. देन आप देख सकते हैं कि लाइफ बॉय, पियर सोप. मीन्स प्राइस डिफ्रेंसिएशन इज नॉट मिक्सड अप. आपने प्राइस के बेसिस में अलग अलग भी आप ब्रांडिंग कर रहे हैं अपने उसको. ठीक है. इट स्टिमुलेट द कंपटीशन विद इन ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो. आपने हर प्रोडक्ट के लिए अपने ही सेम कंपनी ने अलग अलग ब्रांड लगे यूज़ किए, तो इट क्रिएट अ कंपटीशन. ठीक है. आप यू कैन एबल टू एक्सप्लोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट, different types of market segments with your different brands. So you need to decide whether we go for a family brand or we go for the individual brand. Then you need to take decision related to manufacturing brand or distributors brand.
Manufacturer brand also known as a national brand, and it is also known as a own brand. ठीक है, you are using your own brand, it enables you to exercise better control of your product features because it is your own brand. You have a better control over your price, you can charge high price, ठीक है, and you have a very good bargaining power because of this. But customer may be unhappy with you in this case because you have a total control over your pricing. And then promotional expenditure is very high in this case because you need to expend or you need to advertise your product brand. That's why promotion expenditure is increased. Then distributor brand, regional, you can say private or dealer brand. Here we use a regional brand, a private or dealer brand. ठीक है, रिटेलर्स ब्रांड आप यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, डिस्ट्रीब्यूटर्स के ब्रांड यूज़ कर रहे हैं, यू डोंट हैव एनी सेपरेट ब्रांड फॉर योर पर्टिकुलर प्रोडक्ट. ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दिस यू कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन योर मेन कोर एक्टिविटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. You don't need to spend your time in marketing task, and because of this your promotional expenses also go down because promotional activity का काम कौन कर रहा है? The distributor whose brand you are using. But in this case you are not getting a right price for your product, and you can easily tailor the requirement of the customer. आप easily अपने customer के according, customer की requirement के according you can tailor your product in where you, because you are operating in a very small area. Generally हम dealer brands का prefer करते हैं जो हम लोग small area में वर्क कर रहे हैं और हमारी स्मॉल क्वांटिटी बहुत अलग अलग कंट्रीज़ में यूज़ हो रही है. एट दैट टाइम ऑल्सो वी कैन यूज़ दिस डिस्ट्रीब्यूटर ब्रांड. बट बिफोर selecting a distributor brand you need to think certain criteria. You have to consider something things like financial standing. आपके डिस्ट्रीब्यूटर की फाइनेंशियल स्टैंडिंग क्या है, फाइनेंशियल बेस कैसा है, एरिया ऑफ ऑपरेशन किस तरीके का है, उसकी जो है प्रेस्टीज कैसी है, उसकी इमेज कैसी है, एंड व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सेल इज मोर इम्पॉर्टेंट वेल यू आर गोइंग टू सेलेक्ट द डिस्ट्रीब्यूटर्स ब्रांड, कि which brand you are going to use. Then another thing that you need is related to local brand or global brand you are using. Okay, in case of local brand if you are using, there is no negative impression because you are using a local brand and local brand is already famous brand. Okay, they are already accepted, there is no difference in culture, and it suits the local taste and preferences. It easily understood by the customer also, and you can quickly penetrate the market if you are using a local brand, and it has become less expensive for you also. And acceptability you can say of local brand is more in case of low income countries. जो लो इनकम कंट्रीज़ है वहाँ अगर हम लोकल ब्रांड यूज़ करते हैं तो एक्सेप्टेबिलिटी विल इंक्रीज फॉर योर प्रोडक्ट. बट high advertisement and inventory cost is there if you are using a local brand. And if you are going for a global brand, in a case of a global brand, जनरली एक्सपोर्टर्स जो होते हैं वो आपके अडॉप्ट करते हैं ग्लोबल ब्रांड को, लाइक पेप्सी, बिकॉज बाय अडॉप्टिंग अ ग्लोबल ब्रांड हर जगह आपने एक ही ब्रांड यूज़ किया है, तो आपका क्या होगा, इकोनॉमी ऑफ एडवर्टीजमेंट, आप एडवर्टीजमेंट में यू कैन अचीव द इकोनॉमी ऑफ स्केल. आप एक ही एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, यू डोंट नीड टू एडवर्टाइज डिफरेंट कंट्रीज विद डिफरेंट ब्रांड because you are not using a local brand. Okay, then economy of scale is there. You make a market entry very easily क्योंकि अगर आपका global brand है तो it is acceptable, it is act as a promotional tool for you, so promotional expenses also go down. Your sale in beginning it increase कि दिस इज़ अ ग्लोबल ब्रांड, तो आप कस्टमर के पास लोकल और ग्लोबल दो ब्रांड है, तो फॉर विच प्रोडक्ट यू गो फॉर द ग्लोबल ब्रांड. कॉम्पिटिटिव एज आपको भी प्रोवाइड कर रहा है, एंड इट इज़ अप्रोप्रिएट इन केस ऑफ अ ग्लोबल प्रोडक्ट. जहाँ आप स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स मार्केट में सेल आउट कर रहे हो, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स मार्केट में देते हो, वहाँ पर जनरली हमारे लिए बेनिफिशियल होता है कि यू गो फॉर द
global brand. And there are certain strategies when you are using this strategy. Means it is advisable to adopt a branding when your product quality is consistent. आप branding कब use करेंगे? When there is a product quality is consistent and its attribute can be differentiated with. अगर आप attribute differentiate नहीं कर पा रहे तो you don't go for the brand. Okay, otherwise no brand is better for you. Then large firm अगर है, abundant resource आपके पास है, you can adopt your own brand. Otherwise private brand is preferable. Then local brand are better when significant intermarket differentiation is exist. Then you go for the local brand. Otherwise adopt a global brand. And you can use also a multiple brand. And multiple brand is preferable in case of intermarket difference. अगर intermarket difference आपको create करना है, then you go for the multiple brand. Otherwise adopt a single brand. Okay, I hope you understand the branding strategy now. Now next is your packaging and labeling. What exactly packaging and labeling is? Sorry students, before starting packaging and labeling, you should understand the problems in international market relating to branding also. देखिए, branding increase the cost for a small firm. अगर small firm है तो branding अगर आप use कर रहे हो तो it will increase the cost. And established अगर foreign importers हैं, distributors हैं, they will supersede you or exploit the exporters also. These are the problems which generally we face in related to branding. Culture etc factor are there, like nova. Nova is a Spanish. In Spanish, we the meaning of nova is it does not move. और अगर आप नोवा वर्ड एक कार के लिए वर्ड यूज़ करेंगे तो क्या होगा? आपका प्रोडक्ट मार्केट में सेल आउट नहीं होगा वहाँ. ठीक है. एंड सम कंट्रीज आर द रिस्ट्रिक्शन इन यूज ऑफ फॉरेन ब्रांड्स ऑल्सो. So these are the problems which we have to study, which have to tackle before selecting any branding strategies. Okay. Now the packaging and labeling. Packaging and labeling in packing. Packing, which is also known as a transport packing. It means a protective covering used for shipment of the goods. Then we use the word packing. And when you are using a word packaging, it means the product packaging or a consumer packaging, which means packaging of a product that going to reach the consumer, your final customer. Fine. तो पैकेजिंग वर्ड जो है बेसिकली हमारे यहाँ पैकिंग वर्ड आप ले लीजिए या पैकेजिंग वर्ड ले लीजिए, इंटरचेंजेबली यूज हो रहा है. देयर इज अ वेरी थिन लाइन डिफरेंस बिटवीन दैम. ओके, सो what is the main function of packing or packaging? Generally packaging is used to protect the product till it reach to the consumer. Then till it reach to the consumer you need to do packing. ठीक है. And for prevention also, we use packing because of that prevention, yeah, you can say preservation, we can maintain our quality. And second is the promotion of your product. With the help of packing we can promote our product also. There are n number of factors which we need to consider before taking any packing decision, like the physical characteristic of your product and the chemical characteristics क्या है आपके प्रोडक्ट की, आपकी इकोनॉमी कैसी है, आप कितना खर्च कर सकते हैं पैकिंग में. देन योर कन्वीनियंस की जो आपका कस्टमर है उसको कन्वीनियंटली लेके जा सके. ठीक है. देन मिसलिनियस थिंग्स आर देयर लाइक स्टेटूटरी रेगुलेशंस. sometime government force you to use a local language in packaging. You need to specify each and every ingredient in your packing. Okay, fine. So these are the factors that we need to consider. Or in other language we can say the regulation of the foreign country we need to follow for packing. Then buyer specification is there. Then social and cultural factors are there. Like आपने देखा होगा इंडिया में जो है अनएजुकेटेड मास्क है.
So vegetarian or non-vegetarian is a very prominent concern in India. That's why we are using a green and red color dots in our packing. If there is a green, it means it is a vegetarian. If it is red, we consider it as a non-vegetarian. So this is a social culture factor that we need to use in our packing. Then retailing characteristics. If there is like developed countries, we have a self-service facility over there. Then we need to pack accordingly. Then environmental factors are there, like disposability, कि जो आप packing material use कर रहे that can be disposed of easily. You need to consider this also. Okay, so these are the factors that we need to consider before deciding what should be our packing, what material should be used. And in India, we have a Indian Institute of Packing, which look all these things. And labeling is also the part of your packing. Okay, and why we focus on packing so much in international business market? Because it give a extra protection due to distance, due to time, in transportation. Our product need extra protection. Then change in the climate across the countries, then that also is, somewhere is very extreme cold, somewhere is extreme heat. We need a proper packing. Then ability to buy a large pack, different country across the country. ठीक है. In some countries they prefer a small size, in some country they prefer a big size. That's why. Then legal requirement is also there. Then customer or consumer are there. In some countries they prefer a glass bottle, some prefer a metal boxes due to their reuse values. So we need to understand all these things before taking decision related to packing. And export packing is also helpful because आपके जो क्लॉज हैं बिल ऑफ लैंडिंग के, उसको अवॉइड करने के लिए भी वी नीड अ पैकिंग. ठीक है. वी कैन easily get a insurance claim with the help of this. ठीक है. It should also capable to handling your hazardous transportations, or quick examination of the content, which content is there for custom authority. Packaging is necessary. You can easily identify your product, you can say, or you can easily you can educatedly mark your product, and you can easily dispose of your product or confirm your buyer specification easily with the help of packing. Okay, that's why packing is very very important. And that's why in India we have a proper institute also, we have a proper courses for that, for packing concern. Then next is our warranty and after sales service. In international market, international firm has to decide whether to offer the same standardized warranty worldwide. Same warranty आप सब जगह दे रहे हैं, or you change according to the market requirement. Means if you are having a standard warranty worldwide, it create a good image for you. हाई क्वालिटी इंप्रेशन आपका आता है अगर आपने सेम वारंटी यूएस में दे रहे, सेम वारंटी आप इंडिया में दे रहे हैं. एंड इट इज़ वेरी सुटेबल फॉर द ग्लोबल प्रोडक्ट. ओके, एंड यू कैन reduce the, or you can change the warranty terms and conditions also. You can according to the different market, according to the market requirement also. ठीक है. तो it's, these are the decisions which we need to take related to the product, international product. Now in next class we are going to discuss the international pricing decision, how we can take a decision related to pricing of the product. Hope you understand very well. Thank you, students.